Okay, so let's continue from there only. We were trying to prove the relation between gamma and beta function. So what I am gonna do is use here, since gamma n we know e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 into dx. Also we know beta mn is either of this form or of the form 0 to infinity x raised to the power m minus 1 upon 1 plus x raised to the power n plus n into dx. So what my target is to get a relation between gamma n and beta mn. So we are trying to convert what we are actually, we are trying to convert the integral 1 into the convert integral 1 into 2 or 3. See, in the proofs, many students suffer because they try to mug up the things without understanding what the stages, what the separate stages of the proof should be. So what I am gonna do is, as this is very much important for UCAC, they asked, IFOS they asked, 2021, 2018 का questions, you can check it out. So what they wish to have, if they want to convert this integral into that form. That is your target. If your target is clear, then it will be always easy to move. Fine. So what I'm gonna do is, अभी यहाँ पर gamma n can be written as 0 to infinity if I replace x by zx, where z is, suppose that some constant here. So this will be x raised to the power n minus 1, z raised to the power n minus 1 into z into dx. हमने क्या किया है, replace कर दिया है, या putting x की जगह zx. Okay बच्चे? So what I will have here, it will be turning out into 0 to infinity z raised to the power n e raised to the power minus zx into x raised to the power. Please do remember this also. Sometimes we use this directly in the numericals as 0 to infinity e raised to power minus zx into x raised to power n minus 1 dx as gamma n upon z raised to the power n. Okay, so please remember this also. Here I am writing like this, e raised to the power minus zx into x raised to the power n minus 1 is nothing but gamma n upon z raised to the power n. Okay dear, do remember that also. Now, multiplying in 3 by e raised to the power minus z into z raised to the power m minus 1 and then integrating कहाँ से बच्चे, 0 to infinity with respect to z. That has a purpose. अभी second line में it will be like clear to you. So what I have done, e raised to the power minus z, z raised to the power m minus 1 से multiply किया दोनों तरफ और integrate कर दिया with respect to z. Here for this expression I have treated the z as a constant there. So for this expression, e raised to the power minus z, z raised to the power m minus 1 and 1 z raised to the power n, ये वाला, it will convert it into m plus n minus 1. Okay बच्चे, जिसको you have integrated into with respect to z, and here it is x raised to the power m minus 1. Is it clear or not? अच्छा, दूसरा वाला e raised to the power minus zx into x raised to the power m minus 1, the whole integration. Please don't confuse here. From here we have started that z is just a constant for this whole integration with respect to x. So for this expression separately we are dealing with respect to z. Okay, so this integration, the whole value will be some function of z, and for the whole integration that can be treated as constant. So this is a separate integration. Okay, so this will be turning out into, please check it out, e raised to the power minus z into 1 plus x. अभी मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, into z raised to the power m plus n minus 1. Okay बच्चे,
into dz और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। अभी यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा बच्चे, x रेज टू दी पावर m माइनस 1 और कुछ है अपने पास देखेंगे, फाइन, ओके, dx। Now this integration itself, please have a look here what it is gonna do. Compare this. So can I write this integration, बाहर वाला तो integration with respect to x चल रहा है, this integration itself can be written as gamma m plus n, please check it out, divided by इसका, अब ये अल्फा मान लो इसको, सो e रेज टू पावर माइनस अल्फा z इनटू z रेज टू दी पावर सम बीटा माइनस 1 विल बी नथिंग बट गामा बीटा अपॉन दिस अल्फा का पावर n, तो n की जगह यहां पर क्या है m प्लस n, सो व्हाट आई हैव डियर इनटू x पावर m माइनस 1 इनटू dx। इज दैट क्लियर और नॉट? LHS में क्या चल रहा है, दिस इज गामा एंड n, दिस इज गामा m, this expression please check it out, this is gamma m, here I have gamma m plus n as a constant, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, gamma m plus n into 0 to infinity x raised to the power m minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n into dx, and what it is beta mn. So ultimately what you have dear, gamma n into gamma m equals gamma m plus n into beta mn. Please do remember either in this form or people remember it like this, gamma n upon gamma m plus n. Clear है? Very important relation, directly it can be asked in the proof. I am reiterating here, don't confuse whatever I have said, please revise the video and see it again, okay बच्चे? So please do this proof. Based on this we can conclude some other results also now, okay बच्चे? So now I am gonna do some questions over this relation between beta and gamma function. So three properties I have given you. Now I am moving on questions related with the beta gamma function. So let's have some questions from here. Okay. So one question they asked in the IFS 2018. See the question they asked. The question was prove that 0 to a minus x raised to the power m minus 1 into x raised to the power n minus 1 to dx equals a raised to the power m plus n minus 1 into beta mn. Also they have given it like, so now if you are doing proofs then I guess you will have no hurdle in doing such questions. If you are not in the habit of doing proofs, how the substitution should work, you will be always like floating here and there only. So please observe here. The beauty of this lecture series is also like this only. I want to show you paths. वो ऐसा नहीं है कि 5 घंटे का लेक्चर में अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए एंड वी आर हैप्पी, दैट इज नॉट द डिमांड. You have to do questions, but before that teacher is just a mentor or guide for you dear. So listen his words actually. Now suppose that for this question I am not gonna answer you, I am mentoring you for this. Suppose that you want a minus x raised to power m minus 1 x raised to power n minus 1 into dx. इसको आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? Where you want to lead? बीटा mn पे ले जाना चाहते हैं. अभी बीटा mn का एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है? 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx, और 0 to 1 infinity x raised to the power m minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n minus 1 into dx. So ultimately the question demands what actually? Ultimately the question demands कि
you have to replace this integral or transform this integral into either of this form. So for that, what is your target बच्चे? Your target is reaching in this form. So for this we need some substitution. Okay बच्चे, we need some substitution. So that substitution, let's put x equals to ay. Why I have done like this? Please be on the board. If I take x का value 0, y का value will be 0. If I take x का value a, y का value will be 1. Check it out. So limits क्या मिल जाएंगे मुझे? y के लिए y equals to 0 to 1. इसका मतलब अपने को यहाँ पे जाके मजा लेना है. क्लियर है अभी? चलो, सो x की जगह पुट कर दीजिए a by raised to the power m minus 1, sorry, putting in 1. So a minus ay raised to the power m minus 1 into ay का power n minus 1 into ds. What it turns out to be 0 to 1. a बाहर ले लीजिए तो m माइनस 1 यहाँ से आ गया, 1 माइनस वाई का पावर यहाँ पे हो गया, y का पावर n माइनस 1 और a का पावर n माइनस 1 यहाँ से आ गया. तो a इज जस्ट अ कांस्टेंट, तो वो आ गया दिस और अंदर बन गया आपके पास बीटा mn. एनी डाउट? सो यू गॉट द एंड रिजल्ट. ओके बच्चे, कोई इशू? चल, so this is how this relation between beta gamma can be used. Questions like this are given in the PDF. You are suggested to solve those questions, please. Okay, such questions you can tackle. Relation I have already told you, gamma n, that is also some transformations of gamma function. Please do remember this point also. Write a heading please. Some transformations of gamma function. इसके अंदर 3 ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यूज किए जाते हैं. All those transformations you write it as x equals to ay. दूसरा है आपका x equals to log of 1 upon y. And third transformation is x power n equals y. मीन्स किस में करेंगे बच्चे? रिप्लेसिंग, ठीक है, इन गामा n का डेफिनेशन. ओके बच्चे, सो दैट इज लाइक आई विल से इंपॉर्टेंट फॉर यू. If those are in your copy or in your notes, then obviously एक दो बार रिवाइज करने के बाद those will be settled in your mind कि okay, if some integration is looking like that, for example अगर मान लो आपका इंटीग्रेशन कोई है, integration is looking like, if your integrations are looking like, suppose that e raised to the power माइनस a बाई, ये तो मैंने अभी आपको बोल ही दिया. इफ योर इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक 0 to 1 log of 1 upon y raised to the power n minus 1, or your integration is looking like 0 to infinity e raised to the power minus y का power 1 upon y into dy. So the thing is, dear, I am suggesting you, advising you, please do remember such things, otherwise in the exam hall you will feel blank, completely blank. Okay बच्चे, so let's say if you have integrations like this, what the click, मतलब कि एकदम से क्या चमकना चाहिए आपके दिमाग में कि I have to replace x by log 1 upon y in. Is that clear or not? So in this way, if your integrations are like this, so your UPSC, either you talk about CAC or you talk about IFS exam,
beta gamma function is very important for you, and that you will be able to do only when you remember such substitutions. Not remember, you should have an idea कि यार what possible substitutions I can have. So this as an aspirant I used to do as exercise. Okay, so this is thing. The other result, or you can say there are some other points also जिनको मैं miss नहीं करना चाहता. I want कि you people should have in your class notes. So that is the point 1. You can say exam point 1. Exam point 2 I am going to tell you now. And that is, exam point 2 is like कि prove that, मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन भी हो सकता है. Please remember this. Prove that कि गामा n into गामा 1 minus n is pi upon sin n pi. Very important result. Please do remember this. In other topics also you can have some integrations where you use this result. So please do remember this. So if I want to prove this result, what I'm gonna do is, इसके लिए अगर आपको प्रूफ लिखना होगा, so just मैं लिख देता हूँ जल्दी से आपके लिए भी, एक बार सामने रहेगा तो you will have the idea. Zero, since beta mn क्या है, 0 to infinity x raised to the power n minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n into dx. Also we know that कि beta mn is nothing but gamma m into gamma n upon gamma m plus n. So दोस्त अगर आप इसको ऑब्जर्व करें इसकी LHS को और इसको ऑब्जर्व करें इसकी RHS को, प्लीज ऑब्जर्व व्हाट यू विश टू हैव गामा n. तो m की जगह क्या कर दूं मैं, रिप्लेसिंग m by 1 minus n कर दूं. आई विल हैव समथिंग लाइक दिस. तो बीटा mn क्या दिखने लगेगा, बीटा 1 minus n comma n will be gamma 1 minus n gamma n upon gamma 1 minus n. so n से n गया gamma 1. And in this relation please do remember here कि from the definition gamma 1 is 1 or gamma n is nothing but factorial n or n gamma n, sorry n plus 1. ठीक है बच्चे, these properties. और दूसरा gamma half is root pi. All these values you can find from here, this integration only. So these values we will be using later on. So if I use this now for beta 1 minus n, what the definition will look like, I can use this definition and I can find the result as gamma 1. ये यहाँ से मिल गया हमें. So also 0 to infinity, please do remember here, I am suggesting do remember 0 to infinity x raised to the power n minus 1 upon 1 plus dx. This is a standard result which comes out to be pi upon sin n pi, which comes out as pi upon sin n pi. Clear है अभी? So using this result we prove this thing. What I am saying is this result, क्योंकि अभी actually there is possibility because CSE 21 they ask some question proof kind of stuff. So you people are suggested to have basic understanding of proofs also. They can ask, किसी ने मना नहीं किया उनको, ठीक है. Some other question is also there, like एक और property है, एक तो बहुत important है, उसको तो मैं अलग से ही कराऊंगा, duplication formula और ये वाला. एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, वो मैं पीडीएफ में भी आपको मेंशन कर दूंगा. प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है. पीडीएफ में दैट विल बी मेंशन्ड. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस बीटा गामा फंक्शन. आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. अब क्या है, अपने पास कई बार इस टाइप का integrations of the form. See, the motivation behind
anything, if it is known, then you always like have interest in that. So what I am saying is, suppose that you have some integrals like this. Okay, so how such integrals, for example, कल को if someone asks कि find the value of the integral cos raised to the power 9 theta d theta, लगाएंगे integration by parts and you will feel the disaster. Yes or not? So the thing is, whenever you have some integrations like this, then beta gamma function comes into the picture. So that is one calculating. What बच्चे? Calculating. Previously they asked questions over this in CSE as well as IFOS exam. 21 they asked question, not question, the proof kind of question. Okay. So when I was like 2008, BSc second year only, then I realized कि यार such things are so deep और चाहिए कुछ है नहीं, because I was always concerned about कि what substitutions and why that particular substitution. This I have been telling you from the previous lecture to till now. So if I want to calculate this, means क्या है बच्चे मेरे पास, टारगेट बताओ. So this CSE 21, okay, means टारगेट मेरा क्या है, 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू दी पावर cos n sin थीटा एंड cos n थीटा. इसके लिए कुछ मुझे बीटा mn का स्ट्रक्चर मिले. I wish to have a structure from beta mn and this integration itself. So बच्चे मेरे पास बीटा mn है क्या, बीटा mn है क्या, 0 to 1 x raised to the power m minus 1, 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx. Now what I can do is, I want this to reach here. What बच्चे? This to reach here. So what the substitution? क्या substitution करेंगे आप बताइए? Tell me. If I put, whenever 1 minus लिखा है तो 1 minus sin square theta cos square theta देगा. तो अगर मैं x की जगह sin square theta लिख दूं, if I write x की जगह sin square theta, so I may have cos here, sin here, I may have the possibility to reach here. बस हो गया प्रूफ. क्या करेंगे, अब इसको यहां पर पुट कर दीजिए, यू विल हैव अ सब्स्टिट्यूशन हियर. क्लियर है? अभी कर दूं क्या? चलो मैं ही कर देता हूं. सो dx इज ऑलवेज, वैसे मैं इसको इग्नोर करता हूं लेकिन फिर भी कर देता हूं क्योंकि पूछा है 21 में. सो dx इक्वल्स टू sin थीटा cos थीटा, उसको यहां पर ले आओ. तो बीटा mn क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, 0 to 1 x raised to the power m sin 2 m minus 2 थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है, सॉरी x की जगह sin स्क्वायर, हाँ ठीक तो लिखा था, sin स्क्वायर थीटा पावर m minus 1, 1 minus sin स्क्वायर थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा raised to the power n minus 1 dx की जगह 2 sin थीटा cos theta d theta. Is that clear or not? So what I can write from, अच्छा the limit will be changed, theta will go from 0 to pi by 2. Clear? x 0 से 1 के लिए. Now I solve this integration. What बच्चे? I solve 0 से pi by 2. Please be on the board because people may confuse here only because there are two formulas. और यहीं पर उनका बैंड बजता है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कट लाता हूँ. सो दिस विल बी साइन रेज टू दी पावर 2m माइनस 2 यहाँ से होगा, एक साइन यहाँ से आ जाएगा, तो 2m माइनस 1 इंटू थीटा. कॉस रेज टू दी पावर 2n माइनस 2 यहाँ से होगा, एक कॉस यहाँ से आएगा, सो 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू डी थीटा. और ये वाला 2 बच्चे यहाँ रख लो आप. क्लियर है अभी? So what the relation you got here? 1 by 2
बीटा एम एन इज नथिंग बट 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा. डू रिमेंबर दिस ऑल्सो, क्योंकि कई बार मिडल ऑफ द स्टेप से भी दे आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे बच्चे ना केवल फॉर्मूला दे जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड दे थिंक ओके आई एम गोइंग टू अचीव 300 प्लस इन द ऑप्शनल, नॉट गोना वर्क. सो अब इसका एक तो स्टेप यहाँ तक हो गया. सेकेंड स्टेप में मैं जा रहा हूं. मेरे को क्या मिल चुका है 1/2 बीटा एम एन इज नथिंग बट 0 से पाई बाई 2 जो इस रिलेशन से मुझे मिला है साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा 2n माइनस कॉस रेज टू पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू जी थीटा. अब बच्चे बीटा एम एन अभी क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन पढ़ा है या नहीं. सो अभी क्या करना है अपने को, इफ आई वॉन्ट दिस इन दिस फॉर्म, सो क्या करना पड़ेगा अपने को, इफ आई रिप्लेस m बाई m प्लस हाफ, देखो ये चीज मिलेगी कि नहीं, m बाई m प्लस हाफ. अगर मैं m को रिप्लेस कर दूं m प्लस हाफ से तो 2m माइनस 1 क्या मिलने लगेगा मुझे बताओ, 2m प्लस 1 और प्लस 1 यहां से चला जाएगा. सो अल्टीमेटली आई विल हैव 1/2 बीटा m प्लस हाफ n plus half is equal to 0 to pi by 2 sin raised to the power m theta cos raised to the power n theta d theta. बीटा एम एन का फॉर्मूला से अगर इसको ओपन करेंगे तो गामा m प्लस हाफ डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस. क्लियर? So some people remember this formula. I remember those both because I was always interested in doing probes. Why I am insisting here actually, there is also a duplication formula. वहां पर भी the same logic is applied. I am saying same logic, duplication formula. PDF में it is given, so you are suggested to do the proof of that also. What I am saying, it is expected always either in the CAC or in the IFOS exam. The logic will move like this only. Clear है अभी? Any doubt? Okay. So from here अभी क्या करेंगे, आई एम टेकिंग सम जस्ट क्वेश्चंस, ऑल्दो दोस कैन बी डिस्कस्ड इन द ट्यूटोरियल आल्सो, बट हियर एक दो क्वेश्चंस में करके आपको बता देता हूं हाउ दिस बीटा गामा फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटीग्रल्स. मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपके लिए मेरे बच्चे. चलो एक ठीक सा क्वेश्चन उठा लेते हैं. लेट्स से बीटा एम एन से कैसे क्वेश्चंस हिट करने होते हैं. लेट्स से दे आस्क्ड कैलकुलेट द इंटीग्रल I equals 0 to infinity x dx upon 1 plus x raised to the power 6. Is it clear है अभी आपको ये चीज? तो उसने कहा you have to calculate this integral. Now you think if you don't have any idea about beta gamma function, what you will be doing? करो क्या करेंगे हम इसमें? So what I am gonna do is, let's say अगर मैं इसको let x power 6 को मैं y मान लूं, so this will be 6x raised to the power 6 dx 6 to the power 5 equals to dy. So this will be converted into I equals 0 to infinity, x is nothing but y raised to the power 1 by 6, x power 6 को मान लिया है y, so it is converted into 1 upon 1 plus y into dx की जगह इसको इधर भेजो 1 upon 6 1 upon x raised to the power 5, x raised to the power 5 क्या हो जाएगा यहाँ से y raised to the power
5/6 into dy. Is it or not? So 1/6 is just a constant term. Wait a bit. एक्चुअली ना यहाँ लिमिट देख के अपने को ये आइडिया लग जाता है कि पहले वाला फॉर्म 0 to 1 वाला फॉर्म यूज करूंगा कि 0 to infinity वाला फॉर्म. अल्टीमेटली दिस इज गोना बी सेटल्ड विद बीटा mn, क्योंकि एक बार बीटा mn इफ वी हैव देन वी कैन हैव द गामा फंक्शन यूज्ड फॉर बीटा mn. फाइन. चलो, सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू y पावर 1/6. इसको उधर भेज देंगे तो 1/6 माइनस 5/6. So 1 minus 4/6 means 2/3 divided by 1 plus pi into dy. क्या बात बनी अभी तक? फेस दिखा क्या? नहीं दिखा तो हम चमका देते हैं आपको. It can be written as, please be focused, 1/3 minus 1. Check it out. Minus 2/3 can be written as this. 1 plus. अभी यहाँ पर what I have to manage so that I can have e raised m minus 1 upon, अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को मैनेज करना भी तो होगा अपने पास. अब 1 प्लस बाई का पावर कैसे मैनेज करें आप, so that you have यहाँ पर m plus n kind of structure. So I am marking star here. I can manage it as 1/3 plus 2/3. Please check it out and mark star here. Why I have managed this as here? Because I want to use the formula clear मेरे बच्चे? So यहाँ पर पावर 1 था इसका, so 1 I can manage like this. आप इसको कंपेयर कर दो. This turns out to be beta mn. Is that clear? Now, in case of gamma function, what it converted into? Beta gamma 1/3 into gamma 2/3. Beta mn is what? Gamma n upon gamma m plus n. So this converted into 1/6 gamma. Again mark star here. Otherwise, अगर बीटा गामा यूज नहीं करना होता तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस आपसे क्यों? Why they ask this such integrations? So whenever you have integrations like this in the definite form, try to go with the form 1. In the infinity kind of stuff, try to go with this form. Substitution is the crucial step for this beta gamma part. Clear? अभी भी यहाँ कुछ लोग फंसेंगे. That is why I am stopping here. अब 2/3 can be written as 1 minus 1/3 or not? Check it out. ये तो गामा 1 हो गया. 2/3 I replaced by 1 minus 1/3. So what happened? Now I will use the result, previous result. What was the result? Gamma n, gamma 1 minus n is nothing but pi upon sin n pi. So n की जगह we have, and sin pi/3 का वैल्यू 1/2. 2 से 3 कट गया. So you have ultimately pi/3. Clear or not? So this is the beautiful use of beta gamma function. Again I am saying there are enough number of examples given to you in the PDF. Also the good thing is कि कहाँ आप फंस सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी चीज़ों को मेंशन कर दिया है. मैंने बता दिया है बच्चे कि here you can have the problem. Clear? So आप लोग डर रहे हैं सर होमवर्क देने वाले हैं. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आई टॉक यू. सी देखिए कैसे आपको ये चीज substitution targeting towards something. If this thing is clear to you, beta gamma will be seeming very easy to you guys. Okay, so that is the thing I want to explore. So what I say is कि for the beta gamma function we need to have understanding about how we are going to use or how we are going to convert. Okay, so from here suppose that I have some other question, for the integrations wala part. In that case I can take any example here.
You can try those examples also. Okay. अच्छा, एक्सपोनेंशियल वाला आपके पास एक और रहेगा, 0 to infinity e raised power minus ax into sin bx वाला, ये वाला फॉर्म भी करके रखिए. आई गेस दे कैन आस्क इनटू योर एग्जाम. ओके बच्चे, so fine. I think beta gamma function we have enough done, things are done. इसके बाद we will start the multiple integral. Okay dear, fine, good luck.